मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इन्होंने कुछ फोटोज की बात कर रहे थे, ये सिर्फ मेरा फोटो देख के सोच रहे थे कि इसकी बैंड बजाने में मजा आएगा। Okay? और उसके बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया गया है। I can feel that ईशान अवस्थी वाली एनर्जी right now. Excuse me. आजकल के लोगों का काफी ये परसेप्शन होता है, गेमिंग काफी अडिक्टिव भी है, उसको आज लेजिट एक करियर पाथ की तरह भी देखा जा रहा है। You said it right. Of course, gaming can be addictive, but it is a legit career option and a very, very lucrative career option if you have the skill, if you have the drive. आपने एक खान के साथ तो काम कर लिया, अब बाकी खान के साथ कब करोगे? You have to be at that level in order to work with those people. Okay? आपको वो ready होना बहुत जरूरी होता है. So I feel when I'm at that level, I'll automatically get that work. What is this? This is दिल दिया this is a takla. No. Hello guys, this is Tanu Awasthi and you're watching me on Filmy Gyan. और आज हमारे साथ शामिल हुई है the cast of gamer लोग, the beautiful Anjali, the brilliant Darshil, the amazing Abhinay sir and the amazing Arya sir. कैसे हो आप लोग? Wonderful. Thank you so much for having us here. I am glad. I would like to take a moment to appreciate. ट्रेलर देखने के बाद तो बहुत ही मज़ा आया. मतलब मैं खुद एक जेंजी हूँ और I could relate to the trailer. और आजकल की जनरेशन को तो भाई relatable story line और content ही पसंद आता है. I want to ask you guys कि what drew you both to this new age e-sport storyline? क्या आप लोग खुद personally एक secretly gamers हो? Yeah, Anjali is absolutely a gamer. So, Listen, I'm an anime geek, so at least I have one thing. नहीं, but the gaming part का तो बताओ कुछ. How you play Scrabble and all those games? I remember Professionally. this. I play escape room games also on my phone. Oh. That's about it. So that drew you She's not a to the gamer storyline. at all. No, the fact that I knew nothing about esports is what drew me to the story in the first place, because it's something that I was not familiar with, something I've never done before, and it's exciting to explore new territory. I also really related to the character apart from her gaming persona. I thought she was a very cool chick, and she has her head on her shoulders, she's very sorted, she's not afraid to show her vulnerable side, she wears her heart on her sleeve. So all of these things were really attractive for me to take this role on. I also really liked that it was very comedy centric. That's a genre I've never done before, so I was very excited. Yes. What about you, Darshil? I was very happy, honestly, and ऐसा लगा कि किसी ने मेरी लाइफ ट्रैक की और उसको डिसाइड हुआ कि वो एक स्टोरी लिखते हैं उस पर, बिकॉज आई हैव बीन अ गेमर. मैंने बहुत ऐसे कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मैंने बहुत गेमिंग पास पीसी स्पेसिफिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस शो. सो आई वाज थिंकिंग कि इट्स नॉट ओनली अ गेमिंग themed show, but it is also a emotion driven entertaining show. मतलब something new. आज हम सभी को कुछ नया देखना है and सबको कुछ हटके देखना है and stuff. The expectations are sky high. So I felt that when I was reading this as an audience, just the script, just off the book, it felt like ये कुछ अलग है, कुछ हटके सा है, and from a familiar background of gaming. Because at the end of the day, we all love to spend our time playing video games or any other thing, something recreational also. So मुझे वो चीज़ बड़ी excite कर गई, and the character of Raghu and his passion and his drive. वो अगर कोई चीज़ में believe कर लेता है कि उसको वो हासिल करनी है, वो कर लेगा आंख बंद करके. And I sometimes try and tap in that कि यार how inspiring that thought process of Raghu is, and sometimes it can help me also in my life as well. So yeah, and along with that, it was obviously working with Abhinay sir. So yes. And it was very pampering for me क्योंकि मुझे लगा finally कि मैं evolve कर चुका हूँ as an actor to take the next step in my life as a career, and to work with him. जितना ज़्यादा बोले उतना कम होने वाला है. And then I got as a gift package, I got Arya sir, my elder brother, जो मुझे younger brother नहीं मानते हैं. Absolutely मानता हूँ. From the day I met him, it was like I met a kindred spirit, and in so many ways I saw
who I was 10 years ago in him, and we just clicked. It was amazing, and it wasn't just with him. Honestly speaking, Anjali and every other member on the cast, we became a surrogate family, and not just for the period of shoot, but something I would say that we have carried forward even till today, where even now we spend a lot of time together whenever we get the chance, and that's something which That's special, actually. Very Special. special. It's lucky to be like मैं ऑलरेडी बहुत खुश था पर उसके बाद मैं और ज़्यादा ग्रेटफुल और हैप्पी फील करता हूँ और लकी फील करता हूँ बिकॉज इट लाइक सर सेड फील्स लाइक अ फैमिली अ सरोगेट फैमिली एंड या दैट्स or what more can you ask for? Right. True. True. Abhinay sir, I want to ask you, Yeah. what made you say yes to this project? आपने दिल्ली पहली जैसी thriller, amazing concept वाली movies को produce किया है और what made you say yes? Because of Arya or because of the Gen Z concept, the new age concept? No, absolutely. First and foremost, though, it was a concept in itself excited me because it was one of the first gaming related or at least based on gaming kind of a show with a very Gen Z cast which was required in it. Something that I did 14 years back in Delhi Belly, which is with the newer generation, the younger generation at that point of time. And I was always waiting to get something which I can I either produce or direct. Of course, Delhi Belly I directed, produced by Amir, and this one was something that I got a chance to get my hands on a script which made so much sense. And apart from gaming, there is so much more into it. There are the layers, and I always like layered stuff. I like to layer everything that I do, whether it's in film or in life. So this felt so layered. The writers had done such a fantastic job that it was layered with, while it is on gaming as a canvas, the colors were characters. The colors, the strokes were relationships. And that combination makes a fabulous painting. And that, I think, was what attracted me to say yes to it, to say that this must be done. And of course, at this stage, I felt that there is none other than Arya who should direct it because he relates to that age group. He relates to the today's issues. He being a gamer all his life, that made all the sense. And this was a no-brainer for me. Also, Arya, correct me if I'm wrong. This is the first time you're directing a film, right? Yes, absolutely. How was it for you? आपके लिए जो concept है, जैसे सर ने बोला, काफी relatable था. आप खुद एक gamer हो. What made you कि दर्शील और अंजलि will be the perfect fit for this film? I think it was again, like Abhinay sir said about the show, with respect to the casting, it was a no-brainer. Right. I remember when we all had sat together within our conference room and we were looking at different cast options that were presented to us for Darshil and Anjali's character. It was when we saw his photo and when we saw her photo, it was like, it was both of us were instantly just, this is it. This is who we want to go with. And I don't know, things just completely fell into place to make it happen because I remember it was, especially with Anjali coming on board, it was a little, it took a while to get her to come on board, but when it happened, it was just like we Actually, all, it was day perfect. one, no? Day Right, one, day we one, wanted her. Okay. We wanted Anjali and we wanted Darshil. When the thing was, it was like a match made in heaven between this, between the series and them. Like, this is bang on. And to be honest with you, didn't it happen with almost every character? Yeah. Almost every character were like, there are so many photographs that are shown, so many auditions, and before the auditions, the photographs, and it's like whatever we chose right in the beginning, eventually ghum phir ke, we ended up, with all of them in our kitty, and that was the best thing to happen. And as you guys mentioned कि there is more to the film just than gaming. Yeah. और ट्रेलर देखने के बाद भी हमें समझ में आया कि काफ़ी सारा प्रेशर भी फील हुआ, whether it's the family expectations, ambitions or whatever, or dreams. तो
क्या आप लोगों के साथ कभी पर्सनली इन रियल लाइफ ऐसा हुआ है व्हाइल यू वर प्लेइंग द कैरेक्टर, डिड यू गाइस फील कि हाँ पर्सनली हमें भी ऐसा फील हुआ है इन रियल लाइफ? इज देयर एनी फैमिली एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज दर्शील, इफ आई टॉक टू यू, आपके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आप फाइनली गेमर लोग में हो, बिकॉज दे वर लाइक अरे दर्शील कहाँ था इतने समय से, फाइनली। तो आप क्या कहोगे उस चीज़ पे? 100%। यू नो, गेमर लोग एक वेब शो है जो जिसकी आई डोंट नो, आई फील व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, I said it before to you, I think. I was connecting to Raghu and I was learning more from Raghu, the character that I play, उसका नाम रघु है, a lot. क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक inner dialogue, एक self belief, एक वो कहते हैं ना, एक बहुत inner strong communication एक core रखता था. Because somewhere as a gamer you tend to isolate, somewhere कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग तुम्हें अलग तरीके से देखते हैं when you're a gamer types, because you're spending most of your time on the screen. But he's still not one trick. वो गेमर भी है, बट उसको लोगों के साथ बात करना भी थोड़ा बहुत आता है. मतलब ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उसने बहुत उसने गलत चीज़ें बहुत गलत टाइम पे बोली है इस शो में. बट he eventually does learn, and that is what company shows. You know, वो आइसोलेट हो जाता है, और हम सब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देते हैं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं सबसे पहले. I feel that communicating is fun. I mean, you can talk to people. Sometimes you are not surrounded. Sometimes you can go to people and talk to them. यहाँ पे रघु के साथ ऐसा होता है. Be surrounded with people, but वो isolate कर जाता है. So I learned it in that way कि नहीं यार, he had a surrounding. He could go there. He could talk to those people. So I feel कि हाँ, अगर मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, I can go and talk to people and share. And you know, you feel better. So there have been those situations in more than one ways. जहाँ पर मैं सोच रहा था ये काफ़ी रियल लाइफ और काफ़ी फ्रीकी लगता था मुझे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा लगता था किसी ने मुझे डॉक्यूमेंट करके किसी ने लिख लिया है ये कहानी. सो दैट यूज्ड टू फील, एंड लाइक सर सेड, it's 1000% true. It's all the single characters, including Anjali, including Jaggi, and all these other characters whoever have played. There is some part of their soul in the character that they are playing, and वो हमें बनाने में जितना मज़ा आया है, लेकिन अब हमारी बस वही होप है कि हम हमारे ऑडियंसेस आपके तरफ और हम सभी को उतना ही, आप सभी को उतना ही मज़ा आए. You know, when it comes out, it's coming out on 12th June on Amazon MX Player for free. So you all can watch it at your convenience. Your fans also wants to know if Darshil Safari is an introvert in real life. Yes. You are? I'm a big introvert. Are you an introvert? देखो मुझे कुछ पता He नहीं. likes to call himself likes an to introvert. think, yeah, he's He an likes to introvert. call himself an introvert, but actually एक मिनट, not. सबसे पहले मैं एक He चीज, loves- the एक life मिनट of the party. होल्ड ऑन, कोई लाइफ वाइफ या हाइप कर रहे हैं. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब इन्होंने कुछ फोटोज की बात कर रहे थे, ये सिर्फ मेरा फोटो देख के सोच रहे थे कि इसकी बैंड बजाने में मजा आएगा. Okay? और उसके बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया गया है. देयर इज अ फनी स्टोरी ऑन दिस. व्हेन आर्या सर एंड आई हैड मेट फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम इन आवर लाइफ, हम कोई वी वर एट सम कैफे और समथिंग, एंड वी हैड मेट द कास्ट एंड क्रू जस्ट टू बॉन्ड एंड एवरीथिंग. एंड आई एम सिटिंग हियर, आर्या सर इज हियर एंड एवरीबडी एल्स इज हियर. ओके, और मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, ये सब बात कर रहे. सडनली आर्या सर इज नॉकिंग, लाइक दर्शील सुनना. And I'm like, what happened? He's like, तेरे लगने वाले हैं. And I was like, ऐसा कौन बोलता है यार, क्या लगने वाला है, मैंने कुछ किया है क्या? And then you start overthinking it so much. लेकिन उसके बाद जो 2 महीने मेरे गुजरे हैं are the most memorable of my life. So मैं ये सोचता हूँ कि कभी-कभी लगना is cool, you know, तुम्हारे जब लगते हैं तो it's a cool thing. I can feel that Ishan Awasthi वाली energy right Excuse now. me. He's by no means an introvert, just to answer मैं your बहुत question. इंट्रोवर्टेड हूँ. मैं आई डोंट नो ये सब, मैं बस आई जस्ट फील वेरी ऑनेस्टली, सच बता रहा हूँ, एंड आई मीन दिस विद ऑल माय हार्ट, आई फील वेरी मच एट होम विद एवरीबॉडी. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग सो मच. दैट्स इट. सो व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग, यू नो, आई एम नॉट फीलिंग. और आपने अपनी करियर की उड़ान काफ़ी छोटी उम्र में भर ली थी, 9 साल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आमिर सर के साथ वो भी. तो क्या ऐसी कोई एडवाइस आपको याद है जो कि आप हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते हो, जो आमिर सर ने आपको दी हो? सी, वो तो एक एनसाइक्लोपीडिया जैसे है. उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, एंड दिस बैक इन 2006. Yeah. आपको मैं बोलूँगा कुछ 18 years बैक कुछ याद है तो यू वोंट रिमेंबर.
बट मुझे वो बहुत 3 महीने बहुत प्रॉपरली याद है मेरी लाइफ के, उसके आसपास का कुछ याद नहीं है मुझे, बिकॉज दैट वाज सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आपको बोलना हो, आप मेरी सीडिंग बोल दो, आपको जो बोलना है बोल दो, इट्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. क्योंकि उसके बाद एज आई ग्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी इवेंचुअली. सो देयर वाज टू मेनी एडवाइसेस. एंड द अदर थिंग दैट आई रिमेंबर, सर यूज्ड टू बी सो क्यूरियस about each and everything, like about the story, about how to make the project better, what you can add. And I remember Amir sir used to take inputs from everybody, even the ADs, everybody. And तभी मुझे realize हुआ कि at the end of the day it's not कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे सब पता है, it's about a team process. And that has happened, that I've experienced in 2 ways in the last year. Because while shooting Gamer Log, we had a team process, I feel, all of us. And that's thanks to Arya sir and Neeta ma'am as well. Neeta ma'am is the producer of the show. And Abhinay sir तो थे ही. So we knew that if we are going wrong, end में Abhinay sir संभाल लेंगे सब कुछ. जो उन्होंने बहुत संभाला है. So it was a team process to make this. And the story of Gamer Log itself is a team process. So like I said, we've experienced it in 2 ways. And yeah, I think I answered, no? बहुत बोल दिया. Okay. Thank you. आज के समय में जैसे गेमर लोग हैं वो भी एक डिजिटल रेवोल्यूशन की ही पार्ट मान सकते हैं हम उस चीज़ को. बट आजकल के लोगों का काफ़ी ये परसेप्शन होता है कि यार गेमिंग काफ़ी अडिक्टिव भी है, बट उसको आज लेजिट एक करियर पाथ की तरह भी देखा जा रहा है. क्योंकि हर लोग हम हमेशा ये सुनते हैं कि अरे मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बट ये कभी कोई नहीं कहता है कि मेरा बेटा गेमर बनेगा. बिल्कुल. So what do you guys have to say on this? No, but that is what the show is about. Yeah. Actually, that's the best thing that anybody could take out of the show. कि अगर वो ये शो के बाद अगर सोचना भी शुरू करे ना थोड़ा भी कि यार ये एक ऑप्शन है जिसमें हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड समथिंग. बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड कि द शो के द्वारा हम हमेशा से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि एंड पर्टिकुलरली ये शो में कि जो लोगों की परसेप्शन होती है कभी कभी वो गलत होती है. समटाइम्स इट इज़ रॉन्ग, एंड दैट रॉन्ग परसेप्शन, एंड यू सेड इट राइट, कैन गेम बी एडिक्टिव? गेमिंग कैन बी वेरी एडिक्टिव एंड इट कैन बी डेंजरसली एडिक्टिव. लेकिन वो तो हर चीज़ लाइफ के हर चीज़ में मायने रखता है. एनीथिंग दैट यू डू ओवरडू इज एन एडिक्शन. सो गेमिंग इज नॉट अ एक्सेप्शन टू दैट. ऑफ कोर्स गेमिंग कैन बी एडिक्टिव, बट it is a legit career option and a very, very lucrative career option if you have the skill, if you have the drive. Right. You know, and that's exactly what we are trying to say through this show. So I hope people get that. True. I feel also that, you know, as for parents specifically, एक बैलेंस की ज़रूरत होती है. यू नो दे आर लुकिंग एट के भाई तुम सेटल हो, तुम अपनी लाइफ को बैलेंस करो. दैट्स व्हाई दे स्टॉप यू, बिकॉज गेमिंग वगैरह यू नो हाउ लाइफ बिकम्स. एंड थ्रू दिस शो, बिकॉज वी आर ऑल्सो डीलिंग विथ वेरी कोर इमोशनल सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है. एंड एट द एंड हाउ इवेंचुअली यू कैन प्रूव योर सेल्फ. आप गेमिंग को एक चीज़ रख सकते हो, बिकॉज आज स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री हम सब बहुत ही एक सेफ अप्रोच रखते हैं हमारी लाइफ में. यू नो समटाइम्स इट्स फाइन टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस, समटाइम्स इट्स फाइन टू एटलीस्ट एक्सप्लोर. Correct. सो हमने वो एक थोड़ा कुछ ट्राई किया है, विच वी तो हैड आई थिंक अ ब्लास्ट मेकिंग. आर्या सर, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग. I actually did. I was waiting for him to finish to add on to what Yeah, Abhinay double, sir right? and Darshil said. Is that I think, you know, sometimes, and it's been, I think, a generational thing, or it's been inculcated in us over years and years and years, that if, like Darshil said, if you're settled in life, life is good. But I think a lot of that trend has changed over the last couple of years, and more than security, a lot of, especially the newer generations, value happiness and value how good they are feeling doing what they're doing. And sometimes it might not be something which is going to earn you 100 crores in life. It might be something which is just helping you survive. But I think the important part is that if you're enjoying really passionately doing what you're doing, there is no venue or career option in life which is something we should say this should not be done by anyone. And I think that is something that we also try to touch upon on this show. Of course, it's based on gaming and in the world of gaming, but I think we are trying to speak to a larger audience with this as well.
Yeah. Yeah. Okay, so I would like to quickly move on to the segments that we have. हमारे पास बड़े मजेदार segments हैं. So the first one is what the comment. This is basically for you guys. तो हमने कुछ comment filter out किए हैं from your profile. Oh. And you have to react on it. तो basically आपके fans ने लिखा है ये. Done. Okay, so the first one is for Darshil. आपने एक खान के साथ तो काम कर लिया, अब बाकी खान के साथ कब करोगे? मुझे कैसे पता? मैं थोड़ी डिसाइड करता हूँ कि हाँ अभी ये खान के साथ काम करूँगा. आई एम नॉट एट दैट पोजीशन unless I become some big producer or something. But जल्द से जल्द I believe in one thing and this I was saying recently only कि you have to be at that level in order to work with those people. Okay? आपको वो ready होना बहुत ज़रूरी होता है. And I felt very happy and very satisfied with myself कि मैं एक उस level पे पहुंचा कि मैं अभिनय सर, RS सर, gamer लोग पे काम कर पाया. So I feel when I'm at that level, I'll automatically get that work. So yeah. Okay, so the last comment is for both of you. दर्शील और अंजलि को बिग बॉस में आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए अंजलि को. I think अंजलि. I think you will thrive there. I don't know what to say. No one I'll wants sit in to. a corner. I think wanting I to would watch agree with anime. Anjali. You would thrive. You there. would thrive. You're such a people पागल है वो person. सब You're लोग. personable. You like जरा to भी talk नहीं. I'm to a people. people person with my people यार. मैं बार-बार बोल रहा हूँ They'll यार. become your people. ऐसा मतलब क्या फैमिली वाले थोड़ी है बिग बॉस में. मेरे घर पे एक बिग बॉस चलता है ऑलवेज. Okay, तो हमारा लास्ट गेम है Guess the song by icons. तो मैं आप लोग को कुछ icons दिखाने वाली हूँ और आप लोग को गाना guess करना है सबको. Okay. Okay? बोल दूँ? नहीं, अभी नहीं. Okay, so let's start with the first one. Okay, it's visible? I have to squint बोलूं? to see this. Yeah. ऊंची है बिल्डिंग. Yeah, लिफ्ट sing तेरी it. बंद है. गाना पड़ेगा. हाँ, गाना वो पड़ेगा. सिंगर ये है भाई. नहीं, गाना पड़ेगा. So she will sing all of it. Oh my God! Yeah, what? she's a Let's singer. do this. Okay, I don't know गा this के song. किस style पे? We'll get the music. Yeah. Like that. Go. ऊंची है बिल्डिंग. And what are the लिफ्ट lyrics? तेरी बंद है. कैसे मैं आऊँ? Just say 3 lines. Go. ऊंची है building, टेन लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ? कैसे मैं आऊँ? लास्ट लाइन क्या है? दिल रजामंद है. दिल क्या? रजामंद है. रजामंद है. दिल रजामंद है. Yeah, okay. Perfect. अच्छा. I don't know Okay. the song. I'm The sorry. next one. दिल दिया. दिल जान देंगे. दिल दिया जान तुम्हें देंगे. I am so losing this What is this? entire game. This is. दिल दिया This is a takla. No. दिल दिया बोल क्या? दिल दिया तुम्हें. Yeah, somebody speaking. दिल बोले हड़प्पा. No, it's a song. दिल दिया. That was very bad. दिल दिया तुझे. Okay, I give you a hint. गा रहा है. I give you guys a hint. सलमान खान का गाना है. Thanks हाँ. एक ही गाना किया उन्होंने ना. भाई का कितना गाना. एक है 500 गाने. It's very easy now. दिल दिया गल्ला. Sing it ए now. भाई. I have दिल no. दिया गल्ला. Go. Oh, that song. Yeah. Start. Okay. Go. Just say one line. Guys, Just say Okay, one next you one. don't get this point. Okay. line. What the? Out. Sunset to moon fire. Thanks भाई. सूरज. सुबह सूरज डूबा है यारो. सुबह शाम सूरज सूरज. डूबा है यारो. दो. Okay, it's a Shahrukh Khan गाना now. सूरज हुआ मध्यम. Go. चलो I'll give you. हाँ, correct. Yeah. I'll give you. What is the lyrics? सूरज हुआ- चांद ढलने लगा. Ready? 3, 2, 1, go. सूरज हुआ मध्यम, Ding. चांद ढलने लगा. आसमां ये है. That's a Okay, good now one. just the last one. ये क्या है? वो क्या पहला? M. Now I Tali. will not Is help that you guys. 99. Lightning? Okay. This is M. Only M. I'm going to help you with this. Okay. हाँ. M clap 99. Zero. अरे you are making me forget what I'm thinking. Then तू बोल. You're good at it. अरे she said M clap 99. 99. मैं ताली 9,900. No. Okay, so this is Horrible हाथ. है ये लोग. No. थाल. And this is what? अंडे. Not ande. What is this? 00? No. चश्मा. Oh. Olympics. Bangles. Now what is Oh, this? bangles. This is bangles. नौ Ah. Yeah. मेरे हाथों में नौ. Go. This is so you know. I don't know this one at मेरे all. हाथों में Yeah, yeah. नौ चूड़ियां हैं. Yeah. बस. This. Okay, is just the last melody. one. Give me the ये last melody. है, ये last है. हाथों में नौ No, wait, I have a fun one. चूड़ियां हैं. I
I can't. I don't know. Yeah. Actually, you just wanted me to sing this. ना? Okay, so this is the last one. तू कौन चलता पीकॉक Mayur. नहीं तू अरे you almost got it. तू Yeah. तू कौन चल तू कौन It's at the tip of my चलता- tongue and I'm So say it ना टिप से बाहर निकाल तू कौन चलता you got it or what give the melody I'll Shazam it in my it's mind at the tip of my tongue. अरे तो टिप ऑफ द टंग से बाहर आने It's दो not ना। coming, no. तू कौन है No. मैं मोर हूँ क्या So this is a step. ये ये तो कोई टीवी उसमें आता है ना अरे ये मोर का स्टेप है. अरे यार तू कौन किथे? कितने चली नहीं पता भाई Is नहीं it पता? मोरनी बागामा? No, तू किथे चल दिया मोरनी बन के मोर. ये टफ है भाई यार ये बहुत टफ है यार. Oh. This whole game was अच्छा ये तो बताइए तो लास्ट बता दो. दिल का प्यार का फोन. ये तो this is the very easy. मेरे दिल का टेलीफोन Okay, good. How do you know I don't know every every song? songs. Oh my सबसे पहले एक सच बताता हूँ मुझे भी नहीं पता है I just tried to it was easy Yeah. Okay, so lastly, one message to your fans कि वो क्या इस वेब सीरीज से टेक अवे लेके जाएंगे. Go for it. आर्या सर Arya. actually wait let Anjali take it Yes. हाँ. you made me sing no right now 2 minutes back You made me sing so many times. What is the takeaway we should do from this show? I hope that anyone who watches this is filled with love and joy and so much inspiration and perseverance, and you can go and watch this show on the Amazon MX Amazon player. MX player. बिल्कुल free